Annual consumer inflation reached 27.6% last month, the highest level since 1975. Categories that experienced the largest increase in prices included perishable food items, 61.6%, non-perishable food items, 40.3%, and transport, 39.1%. Since January 2022, the price of a kilo of chicken has doubled, onions are up by an eye-watering 6 times, and eggs and wheat by over half. Price increases in everyday essentials directly impact low-income households the most, whose biggest share of everyday expenses is on food and transport. Over the past few months, discussions about trade-offs, occasional leisure versus everyday necessity, good education versus basic sustenance, seem commonplace. Poor households are helplessly witnessing a massive decline in their spending power, with bleak prospects of any recovery. A question worth asking then is, why don't we see a greater reaction from those most impacted? Why aren't there protests, riots, or upheavals taking place, given the sustained pressure of inflation for nearly 4 years? The question becomes even more pertinent given the kind of politics on display. Under the caring hand of the military establishment, the ruling PDM coalition seems more concerned with suppressing opposition leaders and making its own legal troubles disappear. The PTI is busy fighting farcical cases and attempting to place pressure on the government through other political maneuvers. Mainstream political discussions, as seen on tens of news channels every evening, seem to have no time for the rampaging cost of living crisis. Asking why people aren't fed up enough to take matters into their own hands is a reasonable query. Protests and strikes against increasing cost of living are a common feature of politics in other countries, and have become even more so over the past couple of years. Why have Pakistanis taken their worsening conditions mostly lying down? Why have Pakistanis taken their worsening conditions mostly lying down? The study of protest politics provides us some general answers. Scholars from a past era used to think that when external pressures reach a certain threshold, individuals are more likely to rebel. The careful study of protest movements around the world now shows that this is not necessarily the case. There is no one-to-one relationship between worsening conditions and people's ability and psychological inclination for protest. Grievances are almost always present in some form. Whether people pour out on the streets depends on if they have the resources needed to do so. Resources include time, money, and the ability to find and join other people experiencing the same grievances. Low-income households in rural and urban Pakistan do not have easy access to these resources. Time is scarce, money is scant, and the everyday grind of life can be isolating. There is then partial truth to the common adage that the masses are numb. This numbness, however, is not some unique pathological condition as is often suggested, but rather the outcome of very difficult circumstances. Another factor that may explain whether people come out or not is whether the context allows an opportunity to voice grievances without severe costs. The Pakistani context usually does not. Police action has not spared protesting teachers, nurses, farmers, or even the blind. The cost of being water-cannonied, tear-gassed, or put into prison is too high, and one that cannot be borne by those feeling the greatest brunt of inflation. A third factor looks at how people emotionally and mentally understand their grievances and whether they see protests as a solution to those grievances. Here it is common among well-off people to somehow see inactivity of the Pakistani masses as a result of their faith, their acceptance of conditions as a trial by divine power, and their reliance on supplication and prayer as the only solution. While people may resort to religious reasoning, this does not mean that they can't have a clear understanding of the economic crisis. Inflation and unemployment are frequently mentioned as the biggest issues affecting people's lives in surveys across different income groups. Any conversation lasting beyond a few sentences will inevitably turn to economic constraints. The masses are neither immune to pain, nor are they somehow hardwired to accept only supernatural explanations for it. For protest to happen, people need resources, they need opportunity, and they need to find a way to understand what the problem is, what the solutions are, and how protesting can help.
In all three areas, the role of political parties and unions/civic associations is key. The latter are mostly non-existent in Pakistan. But political parties, however, can provide time, money, and link similarly aggrieved people with each other. Parties can provide the opportunity and the platform for the masses to air their grievances. And party leaders can help people understand what the origin of their problem is, who should be held accountable, and how it can be solved. What are Pakistan's mainstream parties doing instead? Creating farcical court cases against opposition leaders. Colluding with the military to create a favorable political field for themselves. Whipping up the specter of foreign conspiracy or religious panic. In other words, acting utterly detached from the society they claim to represent. For grievances to be aired effectively, one would have to look towards alternatives outside the mainstream. Last week, one such alternative, the newly formed leftist Huquq-i Khalq Party, mobilized working-class families in Chungi Amir Sidhu in Lahore against inflation, poor service delivery, and the apathy of the ruling elite. Scores of people came out because activists reached out to them, gave them a platform, and understood their grievances. It is far more than what the entrenched status quo is doing, and given the apathetic state of affairs in the mainstream, supporting such alternatives seems to be the only way forward. The writer teaches politics and sociology at LUMS. Published in Dawn, February 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सार्फिन की सालाना इफरात ज़र गुज़िश्ता माह 27.6% तक पहुँच गई, जो 1975 के बाद से बुलंद तरीन सतह। कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफे का सामना करने वाले ज़ुमरों में ख़राब होने वाली ग़िज़ाई अशिया 61.6%, ख़राब न होने वाली ग़िज़ाई अशिया 40.3% और नक़्ल व हमल 39.1% शामिल है। जनवरी 2022 से अब तक 1 किलो चिकन की कीमत दुगनी हो चुकी है। प्याज की कीमत में 6 गन्ना और अंडों और गंदम की कीमत में आधे से ज़्यादा इजाफा हुआ है। रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बड़ा रास्त असर कम आमदनी वाले घरानों पर पड़ता है, जिनके रोज़मर्रा के अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा खुराक और नक़्ल व हमल पर होता है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान तिजारत के बारे में बातचीत आम मालूम होती है, जैसे कभी कभार तफरी बमुकाबला रोज़मर्रा की ज़रूरत, अच्छी तालीम बमुकाबला बुनियादी रिज़्क। गरीब घराने बेबसी से अपने अखराजात की ताकत में बड़े पैमाने पर कमी देख रहे हैं, जिसकी बहाली के इम्कानात बहुत कम हैं। एक सवाल यह है कि हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों की तरफ से ज़्यादा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं देखते? तकरीबन 4 साल से महंगाई के मुसलसल दबाव के पेश नज़र एहतजाज, फसादात हलचल क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह की सियासत दिखाई जा रही है, इसे देखते हुए ये सवाल और भी अहम हो जाता है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में हुक्मरान PDM इत्तेहाद को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को दबाने और अपनी कानूनी मुश्किलात को ख़त्म करने की ज़्यादा फ़िक्र है। PTI मुज़हका ख़ेज़ मुक़दमात लड़ने और दीगर सियासी हरबों के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश में मसरूफ़ है। मरकज़ी धारे की सियासी बहस, जैसा कि हर शाम 10 न्यूज़ चैनलों पर देखी जाती है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के बहरान में इजाफे के लिए वक्त ही नहीं है। ये पूछना कि लोग मामलात को अपने हाथों में लेने के लिए काफ़ी तंग क्यों नहीं है, एक माकूल सवाल है। जिंदगी की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज और हड़तालें दूसरे ममालिक की सियासत का एक आम हिस्सा हैं और गुज़िश्ता चंद सालों में और भी ज़्यादा हो गए। पाकिस्तानियों ने अपने बिगड़ते हुए हालात को ज़्यादातर लेटकर क्यों लिया है? पाकिस्तानियों ने अपने बिगड़ते हुए हालात को ज़्यादातर लेटकर क्यों लिया है? एहतजाजी सियासत का मुताला हमें कुछ अमूमी जवाबात फराहम करता है। माजी के उलमा ये सोचते थे कि जब बैरूनी दबाव एक ख़ास हद तक पहुँच जाता है तो अफराद के बगावत करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। दुनिया भर में एहतजाजी तहरीकों का मुहतात मुताला अब जाहिर करता है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बिगड़ते हालात और लोगों की सलाहियत और एहतजाज के लिए नफसियाती झुकाव के दरमियान कोई एकतरफा ताल्लुक नहीं है। शिकायत तकरीबन हमेशा किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती हैं।
लोग सड़कों पर निकलते हैं या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आया उनके पास ऐसा करने के लिए दरकार वसाइल हैं या नहीं। वसाइल में वक्त, पैसा और इसी तरह की शिकायत का सामना करने वाले दूसरे लोगों को तलाश करने और शामिल होने की सलाहियत शामिल है। पाकिस्तान के देही और शहरी इलाकों में कम आमदनी वाले घरानों को इन वसाइल तक आसान रसाई हासिल नहीं है। वक्त नायाब है, पैसा कम है और जिंदगी की रोजमर्रा की चुकी अलग थलग हो सकती है। फिर इस आम कहावत में जुज़वी सच्चाई है कि अवाम बेहिस हैं। ताहम ये बेहिस्सी कोई अनोखी पैथोलॉजिकल हालत नहीं है जैसा कि अक्सर तजवीज़ किया जाता है, बल्कि बहुत मुश्किल हालात का नतीजा है। एक और उनसर जो इस बात की वजाहत कर सकता है कि आया लोग बाहर आते हैं या नहीं, वो ये है कि क्या सियाक व सबाक संगीन अखराजात के बगैर शिकायत का इजहार करने का मौका देता है। पाकिस्तानी सियाक व सबाक आम तौर पर ऐसा नहीं करता। पुलिस की कार्रवाई ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा, नर्सों, किसानों और यहाँ तक के नाबीना अफराद को भी नहीं बख्शा है। पानी की तो पोहे, आंसू गैस से चलने या जेल में डालने की कीमत बहुत ज्यादा है और ये वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते जो महंगाई का सबसे बड़ा खमियाजा महसूस कर रहे हैं। तीसरा अंसर ये देखता है कि लोग जज्बाती और जहनी तौर पर अपनी शिकायत को किस तरह समझते हैं और क्या वो एहतजाज को उन शिकायत के हल के तौर पर देखते हैं। यहाँ खुशहाल लोगों में ये बात आम है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तानी अवाम की गैर फालियत को उनके अकीदे के नतीजे में देखते हैं, उनकी शराइत को खुदा की कुदरत की तरफ से आजमाइश के तौर पर कबूल करते हैं और दुआ पर उनका इन्हिसार वाहिद हल है। अगरचे लोग मजहबी इस्तेदलाल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माशी बहरान की वाज़े तफहीम हासिल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ आमदनी वाले ग्रुपों में सर्वे में इफरात ज़र और बेरोजगारी को लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करने वाले सबसे बड़े मसाइल के तौर पर जिक्र किया जाता है। चंद जुमलों से आगे चलने वाली कोई भी बातचीत लाजमी तौर पर माशी रुकावटों की तरफ मुड़ जाएगी। अवाम न तो दर्द से महफूज हैं और न ही वो किसी तरह इसके लिए सिर्फ माफौक अलफितरत वजाहतों को कबूल करने के लिए सख्त हैं। एहतजाज के लिए लोगों को वसाइल की ज़रूरत होती है, उन्हें मौक़े की ज़रूरत होती है और उन्हें ये समझने का तरीक़ा तलाश करने की ज़रूरत होती है कि मसला क्या है, इसका हल क्या है और एहतजाज करने से किस तरह मदद मिल सकती है। इन तीनों शुबों में सियासी जमातों और यूनियनों शहरी अंजुमनों का किरदार कलीदी है। मुअख्खर जिक्र ज़्यादातर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन सियासी जमातें वक्त, पैसा फराहम कर सकती हैं और इसी तरह के मुतासरा लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती हैं। पार्टियां अवाम को अपनी शिकायत का इजहार करने का मौका और प्लेटफॉर्म फराहम कर सकती हैं और पार्टी रहनुमा लोगों को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि उनके मसले की असल क्या है, किसको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इसे कैसे हल किया जा सकता है। इसके बजाय पाकिस्तान की मरकजी धारे की जमातें क्या कर रही हैं? हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुज़हका खेज अदालती मुकदमात कायम करना, अपने लिए साजगार सियासी मैदान पैदा करने के लिए फौज के साथ गठजोड़ करना, गैर मुल्की साजिश या मजहबी खौफ व हरास के खौफ को हुआ देना। दूसरे लफ्जों में, जिस मुआशरे की वो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, इससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक छूटिए का मुजाहिरा करना। शिकायत को मुअस्सिर तरीके से नशर करने के लिए मरकजी धारे से बाहर मुतबादिल की तरफ देखना होगा। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसा ही एक मुतबादिल नो तश्कील शदा बाएं बाजू की जमात हक खुल्क ने लाहौर के इलाके चुंगी आमिर सिद्धू में मेहनतकश खानदानों को महंगाई, नाकिस खदमात की फराहमी और हुक्मरान अशराफिया की बेहिस्सी के खिलाफ मुतहर्रिक किया। बड़ी तादाद में लोग बाहर आए क्योंकि कारकुन उन तक पहुंचे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और उनकी शिकायत को समझा। ये इससे कहीं ज्यादा है जो मौजूदा सूरत हाल यूं की त्यों है और मरकजी धारे में बेहिस्सी की हालत को देखते हुए इस तरह के मतबादलों की हिमायत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मालूम होता है। मुसन्निफ लम्स में सियासत और समाजियात पढ़ाते हैं। अखज़ शदा बतारीख 6 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.